Hello guys, welcome. This is Satyajit Dev. Today we are making an important video for those who are in school because this is the brief summary of the NCERT class 9 first chapter of the physics chapter 8. Okay, we started new sessions in our channel. Okay, so this sessions we will brief you the basic and the important and the qualitative discussion about the motions. Okay, uh, I and the basic about the NCRTs. Okay, in this topic. Okay, so today our topic is motion chapter 8 of the class 8. Okay, so about the motions, every day life we see some objects are in rest and some are in the motion. Okay, the motions are birds fly, fish swims. Okay, atoms, galaxies, plants, our stars are in the motions. Okay, uh, we know that our earth is always in the motion, na? We often an object to be in motion when the position change with time. Okay, this is the main definition of the motion. Okay, when any object changes its positions with time, then we call it in a motion. Okay, in this chapter we shall first learn the describe motions of an along with a straight line. Okay, इस चैप्टर में हम बेसिकली ये जानेंगे कि मोशन स्ट्रेट लाइन पे कैसे होता है. ओके, in for example we interfere motion by observing the movement of dust and movement of leaves and branches of the trees. Okay, most motions are complex, and some object may be move in a straight line, or other may be move in a circular path, or some may be rotate, or few other in a vibrant. Okay guys, so let's say this is a car. Okay, this is a car in a positions A. After a time t, it's moved into positions B. So we can say that the car in a positions of moving from A to B. Okay, आपको समझ में आया ना कि अगर कोई भी चीज़ अगर कोई भी पोजीशन से लेट्स से ए पोजीशन से अगर एक ये किसी भी गिवन टाइम में लेट्स से 5 सेकेंड. ओके, 5 सेकेंड में ये पोजीशन बी तक पहुंच जाता है, तो हम ये मानेंगे कि ये कार मोशन में है. ओके, describing motions, we describe the locations of an object by the specify of a reference point. Okay, let us understood by these examples of a station. Okay, that assume a school in a village is 2 kilometer north. The railway stations have been specify a position school in respect to the railway stations. Okay, यह एक रेलवे स्टेशन है. ओके, इससे 2 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल है. ओके, तो ये रेलवे स्टेशन क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज हमको ये पता चलता है कि रेलवे स्टेशन से अगर हम 2 किलोमीटर अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में चले तो हमें स्कूल मिल जाएगा. ओके, और वी कैन optimize any reference point. Let's say there is a banyan tree. Okay, the banyan tree से school 1 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है. Okay, we can take any reference point. Okay, so इस reference point को therefore the describing of a reference point of an object, we need to specify a reference point. Okay, this reference point called origin. Okay, this reference point called
origin. Okay guys, you understood what is the motion and how we describe a motion. We need a specify reference point, or that reference point we call origin. Okay, मोशन along with a straight line. हम अभी जो जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे ओके ये है मोशन along with a straight line, जो बेस पॉइंट है हमारी इस जो चैप्टर 8 क्लास 9 का है. ओके, द सिंप्लीफाई द टाइप ऑफ द मोशन इन along with a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Okay, let's say there is O A C B A. Okay, there is a let's say there is a object. Okay, any object, it goes to C and then B and then A and then it's come again to C. Okay, so how many distance these object cover? This 30 plus 30 plus 40 and there is 100 na, and then again it's cover 40 and then 30, so this is what 70. So total it's cover 170 centimeter. So distance is what 170 centimeter. Okay, but what is displacement? In this topic we learn another things is displacement. Okay, so displacement says that any object, its initial positions is go A and come again to C. This is what is final. This initial we use U and final we use B. The displacement is V minus U. Okay, so V minus U. Okay, so total displacement is how much? 30 kilometer, 30 centimeter. Okay, so distance is 170 centimeter, but displacement is 30 centimeter, because distance means how much centimeter is covered, but displacement is final minus initial position is called displacement. Okay, here distance and displacement we हमारे पास एक comparison है. The complete length of a path between two person is called displacement. It's called distance. Sorry, displacement is the direct path between any 2 points when measured along with the minimum path between them. Okay, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है. Let's say it's you. Okay, this is a park. Okay, हम आप यहाँ से यहाँ तक आए and then यहाँ तक यहाँ पे यहाँ तक गए and then यहाँ पे यहाँ तक गए. तो let's say इस पर्सन का डिस्टेंस है 3 मीटर, इसका है 4 मीटर और इसका है ओके सो इसका है 6 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस यू कवर 3 4 and 10 distance is 13 meter you covered na in this park. But displacement is आप यहाँ से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए. डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल. तो आपको फाइनल और इनिशियल इसी पोजीशन में है ना, तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा ना. अंडरस्टूड? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन ज़ीरो ऑल्सो. ओके, अगर आपको फाइनल पोजीशंस अगर फाइनल और इनिशियल ओके एक ही पोजीशन में होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस ओके डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता. डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव वैल्यू. ओके, or we make a what is a minimum
path between them. So distance is a scalar quantity. Okay, because distance is what? These are only the magnitude. Okay, not any direction. Distance means distance is a scalar quantity as it only depends on the magnitude, not to the direction, but displacement is a vector quantity as it depends on upon the magnitude and the direction. Okay, some examples are there: length, area, volume, speed, etc. are the distance, but displacement examples are direction, velocity, acceleration, force are the displacement because these are have magnitude and direction also. Okay, uniform and non-uniform motion. Consider an object moving along a straight line. Okay, let us travel a 5 minute, the first second and 5 meter, after second and 5 meter, third second, 5 meter, fourth second. In this case, this object cover 5 meter in each second. Okay, अगर हम एग्जाम्पल का अगर आप समझाएंगे तो यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं. अगर देयर इज ऑब्जेक्ट, ओके, इस डिस्टेंस को हम समझ लेते हैं 5 मीटर. इसको कवर करने में 5 सेकंड टाइम लगता है. ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर. तो इस ईच डिस्टेंस इज यूनिट डिजिट कवर करने में इस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर 5 सेकंड टाइम लगता है. तो दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट आर इन ए यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि ईच यूनिट को कवर करने में इस ऑब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है. ओके, an object cover equal distance in equal interval of time is said to be a uniform motion. Understood, guys? So this time, okay, the time interval is the motion should be small. Okay, इसको small होना पड़ेगा, like 5 second, 1 hour. Okay, this type of, not day to day. Okay, you unequal distance and equal interval of time. Examples: when a car moving in a crowded street, a person is jogging in a park. These are the some interest of the non-uniform motion. आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कार अगर एक क्राउड प्लेस से गुजरता है तो ये हर वक्त सेम जो स्पीड वो मेंटेन नहीं कर सकता. तो दैट मीन्स व्हाट, ये हर वक्त जो यूनिट है उसको इक्वल टाइम में कवर नहीं कर सकता. तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनयूनिफॉर्म मोशन. ओके, let's say there is some examples are there. Okay, wait a minute, let's change my pen color. Okay, ये यहाँ पे देखिए एक प्लेयर बॉलिंग कर रहा है. तो ये पहला बॉलिंग किया 140 किलोमीटर पर आवर, एंड देन सेकंड 143, देन 135, 45, 132 and 130. So different bowling has a different speed. Okay, so this is called what, ununiform motion. Let's say there is a car. Okay, its goal, let's say first kilometer in 50 kilometer per hour. After another kilometer is goes 60 kilometer per hour. So that means this car is not in a uniform motion, because every single unit of distance is covered multiple times. Okay, so this okay, so the measuring the rate of motion is called speed. Okay, average speed.
Okay, what is the average speed? Total distance travel by the total taken time. If in object travel distance as in so then its speed is v. So v is equal to s by t, distance upon time. Okay, speed is distance upon time. Okay, we have an question there. An object travel 60 meter in 6 seconds and another object 60 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Okay, आपको बताना है कि ये जो एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इसका एवरेज स्पीड कितना होगा. ओके, so total distance traveled by an object is what? 60 meter and 60 meter total is 32 meter, and time taken, okay, time taken is what? 6 plus 2 is 8 second. So average speed is what? Total distance traveled by total taken time. So total distance is 32 meter and total taken time is 8 seconds. So when you divide, we got 4. So this is what? 4 meter per second. Therefore the average speed in object is 4 meter per second, or the unit of the speed is meter per second. Okay, SI unit. Okay, standard unit of the speed is meter per second. आपको यह याद रखना है. ओके गाइज, अब आज के लिए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. हम इसका अगली पार्ट हम अपनी पार्ट 2 में लाएंगे, जो कल या परसों आ जाएगा आपके पास. ओके, तो हम ये आपको बताना चाहते हैं, ये जस्ट हमारी ये जो हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी हमारे की, ये हमारा पहला वीडियो है. और भी आता रहेगा आपके पास. अगर आपको अच्छा लगता है तो डू प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू गाइज, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ डू support us and do subscribe guys. Okay, thank you.